बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 12 नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स से है। तो उसके लिए बेटा हम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों ने अपनी बुक्स को ओपन करना है। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक ओपन हो ताकि हम उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, उसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देख लें, उनके हवाले से जो भी सिनोनिम्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक जो है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल चैप्टर नंबर 18 से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने बुक्स बेटा ओपन कर लेनी है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि हमारा नावल से रिलेटेड है, गुड बाय मिस्टर चिप्स से रिलेटेड है। गुड बाय मिस्टर चिप्स बुक्स बेटा आप लोगों की ओपन हो। हम चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। चैप्टर नंबर 12। अब इसमें जो आप लोगों ने नेम देना है इसमें वो है मिस्टर चिप्स स्पीच इन फेयरवेल पार्टी। यानी मिस्टर चिप्स जो है वो अब रिजाइन दे रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिग्नेशन के साथ साथ उनकी स्पीच है और फेयरवेल पार्टी है। उस फेयरवेल पार्टी में उन्होंने क्या स्पीच की उससे रिलेटेड है। So he stayed on at Brookfield, having as little to do with Ralston as possible. And in 1911, Ralston left to better himself. खुद को बेटर करने के लिए Ralston ने ब्रुकफील्ड छोड़ दिया. He was offered the headship of one of the greater public schools. अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बनता है स्टार्ट में ही है when and why, कब और क्यों राल्स्टन लेफ्ट ब्रुकफील्ड, राल्स्टन ने ब्रुकफील्ड क्यों छोड़ा। when and why राल्स्टन लेफ्ट ब्रुकफील्ड। His successor was a man named Chatteris. उसका जानशीन जो था यानी उसके बाद जो आया तो वो Chatteris था, whom Chips liked. He was even younger than Ralston had been, 34. ये 34 साल का था। तो यहाँ पे एक और सेकंड क्वेश्चन बनेगा, who was the successor of Mr. Ralston? Who was the successor of Mr. Ralston? He was supposed to be very brilliant at any rate. He was modern, naturally science-troopos, friendly and sympathetic. Recognizing in Chips a Brookfield institution, he courteously and wisely accepted the situation. अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, अब हमारा अभी पहला पैराग्राफ है और इसमें 3 क्वेश्चंस जो हैं वो बने हैं। थर्ड है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मिस्टर चैटरिस वाज, कि मिस्टर चैटरिस जो है वो किस किस्म का पर्सन था, किस किस्म का शख्स था। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मिस्टर चैटरिस वाज। In 1913, Chips had bronchitis and was off duty for nearly the whole of the winter term. पूरे winter term के लिए उसने छुट्टी की थी। It was that which made him decide to resign that summer when he was 65. After all, it was a good ripe age, and Ralston's straight words had, in some ways, had an effect. He felt that it would not be fair to hang on. हैंग ऑन का मतलब होता है स्टिक, डट जाना, जमे रहना, चिपक जाना, स्टिक, हैंग ऑन, स्टिक. It was to hang on if he could not decently do his job. Besides, he would not sever himself completely. He would take rooms across the road with the excellent Mrs. Ricketts, who had once been linen room maid. He could visit the school whenever he wanted and could still, in a sense, remain a part of it. At that final end of term dinner in July 1913, Chips received his farewell presentations and made a speech. Chips ने presentations दी और उसने speech की थी. It was not a very long speech, but it had a good many jokes in it and was made twice as long perhaps by the latter that impeded its progress. Impede का मतलब होता है hinder, रोकना, रुकावट, obstacle, 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 hindered. There were several Latin quotations in it, as well as the reference to the captain of the school, who Chips said had been guilty of exaggeration in speaking of his Chips services to Brookfield. But then, he comes of an exaggerating family. I remember once having to thrash his father for it. Laughter, अब यहाँ पर क्या कहो कि गूंज होती है। I gave him 1 mark for a Latin translation, and he exaggerated the one into a severed. Roars of laughter and tumultuous cheers. Tumultuous कहते हैं बहुत ज्यादा, हंगामा खेज, loud,
बुलंद आवाज में होना. A typical Chips remark, everyone thought. And then he mentioned that he had been at Brookfield for 42 years and that he had been very happy there. It has been my life, he said simply. Oh, maybe Praetorius refert see Jupiter Annus. ये लैटिन लाइन्स हैं, लातीनी जबान है ये. उफ, आई नीड नॉट ऑफ कोर्स ट्रांसलेट. अब यहाँ पे चिप्स क्या कहता है कि मुझे इनको ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं है. Much later, I remember lots of changes at Brookfield. I remember the first bicycle. I remember when there was no gas or electric light, and we used to have a member of the domestic staff called a lamp boy. He did nothing else but clean and trim. Clean का मतलब होता है साफ करना, and trim काटता था and light lamps throughout the school. I remember when there was a hard frost that lasted for 7 weeks in a winter term. There were no games and the whole school learned to skate on the fence. अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस और बेटा जो बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, when did Mr. Chips retire? Mr. Chips retired at the age of 65. Mr. Chips retired in 1913 at the age of 65. और यहाँ पे आती है what kind of speech did Mr. Chips make? Mr. Chips ने किस किस्म की स्पीच की थी, तो उसमें जिक्र हुआ है, इसको आप लोग नोट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है, what was the duty of the lamp boy? लैंप बॉय की ड्यूटी क्या थी? तो यहां पर लैंप बॉय के मुतालिक भी डिस्कस हो चुका है. I remember there were no gases and the whole school learned to skate on the fence. 1880 something. That was, I remember when 2/3 of the school went down with German measles and big hall was turned into a hospital ward. I remember the great bonfire we had on Mafeking night. It was lit too near the pavilion, and we had to send for the fire brigade to put it out. And the firemen were having their own celebrations, and most of them were in a regrettable condition. I remember Mrs. Brule, whose photograph is still in the tuck shop. She served there until an uncle in Australia left her a lot of money. In fact, I remember so much that I often think I ought to write a book. Now, what should I call it? Memories of Rod and Lines. डंडों की यादें हों. Cheers and laughter. That was a good one, people thought. One of Chip's best. Well, perhaps I shall write it someday, but I would rather tell you about it. Really, I remember. But chiefly I remember all your faces. I never forget them. I have thousands of faces in my mind. The faces of boys. If you come and see me again in years to come, as I hope you all will, I shall try to remember those older faces of yours. But it's just possible. I shall not be able to, and then someday you will come somewhere and I shall not recognize you and you will say to yourself. अब यहाँ पर हमारे पास जो एक और दो क्वेश्चन बनते हैं उसमें है who was Mrs. Brule? Mrs. Brule का यहाँ पे जिक्र हुआ है, इसको आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी नोट करना है. Who was Mrs. Brule? कि Mrs. Brule कौन थी? The old boy does not remember me later, but I do remember you. As you are now, that's the point. In my mind, you never grow up at all. Never. Sometimes, for instance, when people talk to me about our respected chairman of the governors, I think to myself, yes, a jolly little chap with hair that sticks up on top and absolutely no idea whatever about the difference between a gerund and a gerundive. कि जेरंड और जेरेंडिव के मुतालिक उसको डिफरेंस का भी पता ना हो. तो इस चीज को अगर हम देखें तो जेरंड क्या है? जेरंड हम वर्बल नाउन कहते हैं, यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी यूज करते हैं और उसको एज ए सब्जेक्ट यूज कर लें. फॉर एग्जांपल टीच है, मैं टीच के साथ आगे आईएनजी यूज करके इसको बना देता हूं टीचिंग. तो ये जो टीचिंग है ये जेरंड हो गया. अब मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा, टीचिंग इज माई हॉबी, टीचिंग इज माई प्रोफेशन. मैं इधर लिख देता हूं कि टीचिंग मेरा प्रोफेशन है. तो ये टीचिंग क्या है? दिस इज कॉल्ड जेरंड. हम इसको क्या कहेंगे? ये जेरंड है.
इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है, वर्बल नाउन, जेरंड वर्बल नाउन। और जेरेंडिव क्या है कि किसी फेल से बनाया जाने वाला फेलिसिफ्ट, ठीक है, कि कोई फेल है वर्ब से बनाया जाने वाला फेलिसिफ्ट होगा। जैसे मैं बात करूं कि वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग, अब ये जो है ये क्या है, जेरेंडिव है, GERUNDIVE, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये जेरेंडिव है। आप लोगों ने इसको याद रखना है कि ये यहां पे एज ए जेरेंडिव के यूज हुआ है। तो जेरेंडिव और जेरंड का फर्क हमें जो है वो इस जगह पर मुकम्मल तौर पर पता चल जाता है कि जेरेंडिव क्या है यहां पे और जेरंड क्या है। Loud laughter. Well, I must not go on. All right, think of me sometimes, as I shall certainly think of you. Hoik olem mininis javabet. Again, I need not translate. Much laughter and shouting and prolonged cheers. तो ये लैटिन लाइंस हैं, इनका जिक्र नहीं है, तर्जुमा नहीं है। August 1913, Chips went for a cure to Wiesbaden, where he lodged at home of the German master at Brookfield, Herr Staffel, with whom he had become friendly. Staffel was 30 years his junior, but the two men got on excellently. In September, when term began, Chips returned and took up residence at Mrs. Wickett's. He felt a great deal stronger and fitter after his holiday, and almost wished he had not retired. Nevertheless, he found plenty to do. He had all the new boys to tea. He watched all the important matches on the Brookfield ground. Once a term he dined with the head, and once also with the masters. He took on the preparation and editing on a new Brookfieldian directory. He accepted presidency of the Old Boys Club and went to dinners in London. He wrote occasional articles full of jokes and Latin quotations for the Brookfield Terminal magazine. He read his Times every morning very thoroughly, and he also began to read detective stories. He had been keen on them ever since the first thrills of Sherlock. Yes, he was quite busy and quite happy too. Years later, in 1914, he again attended the end of term dinner. There was a lot of war talk, civil war in Ulster, and trouble between Austria and Serbia. Herr Staffel, who was leaving for Germany the next day, told Chips he thought the Balkan business would not come to anything. चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। इसमें एक दो क्वेश्चंस और जो हैं, क्वेश्चन 7, व्हाई डिड चिप्स गो टू वेस्टबेडन, कि चिप्स जो है वो वेस्टबेडन क्यों गया था, इस चीज को भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों के ये चैप्टर नंबर 12, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सिनोनिम्स थे, रीडिंग हमने इसकी कर ली है, तो इसको आप लोगों ने नोट डाउन करना है बेटा। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 12 का था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 13। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज समझ आई होगी। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।